Actually, Prabhupada has mentioned Vishnu Bhakti as it is. We should not change anything. Vishnu, Krishna are same. Different pastimes. Vishnu is the expansion of Krishna. So, Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namah. O Tulsi, beloved of Krishna, I bow before you again and again. My desire is to obtain the service of Shri Radha and Krishna. Whoever has taken shelter of you has his wishes fulfilled. Bestowing your mercy upon me, you make me the resident of Vrindavan. My desire is that you also grant me the residential pleasure grove of Sri Vrindavan Dham. Thus within my vision may always behold the beautiful pastime of Shri Radha and Krishna. I beg you to make me the follower of cowherd damsels of Bija. Please give me the privilege of devotional service and make me your own maid servant. This very fallen and lowly servant of Krishna praise may always swim in the love of Shri Radha and Govinda. Tulsi Maharani ki jai. Bahu janma kare jadi shavana kirtan tabu tan paye Krishna padhe premadana. If one is infested with the 10 offenses against the chanting of the holy name of the Lord, despite of his endeavor chanting the holy name for many births, he will never achieve the love of Godhead, which is the ultimate goal of this life. There are 10 offenses against the chanting of the holy name to be avoided. And they are as follows. Number 1, to blaspheming the devotees of the Lord who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. 2, to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, to be equal or independent of the holy name of the Lord Vishnu, Krishna. 3, to disobey the orders of the spiritual master. 4th, to blaspheme the Vedic literature, a literature and persons of the Vedic version. 5, to consider the glories of chanting of Hare Krishna as imagination. 6, to give some mundane interpretation on the holy name of the Lord. 7, to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. 8, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, kanda. 9, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. 10th, not to have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. Anyone who claims to be a Vaishnava must carefully guard against these 10 offenses in order to quickly achieve the desired success, which is generally in this material world we are forgetful, but we should not forget this. The purpose of life is to attain Krishna Prem, nothing else. It is also offensive to be inattentive by chanting the holy name of the Lord. Now let us all offer our respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, those who are just like desire tree,
And they can fulfill the desire of everyone. And they are full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarvyasya kripa sindhu vaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Vaishnav Thakur Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavinda ki, Namacharya Sri Hadas Thakur ki. Devotees, I remember one happening during Prabhupada's time. And there were two devotees were quarreling with each other, shouting at each other. And one mentioned to other, you cannot offend a Vaishnava. Prabhupada overheard this. Immediately Prabhupada came to the scene. He said, you claim that you are Vaishnava? To be Vaishnava is very rare. Though we are putting dhoti, kurta, tilak, bead bag in our, but we have to change our heart. Unless or until our heart is changed, our heart is full of anarthas, unwanted things. To be Vaishnava is very, very rare. Prabhupada is the only example of real Vaishnava. And we have to try seriously so that one day I become Vaishnava. And Prabhupada, in Prabhupada's wording, he said, to be a Vaishnava is very rare. You think you are Vaishnava? You are not Vaishnava. He was saying, while fighting, one devotee was saying to other, you cannot offend Vaishnava. Means he is claiming that he is a Vaishnava. If he is a Vaishnava, why is he fighting with him? So, purpose of life is to return back home, back to Godhead. And we can only return by becoming a pure Vaishnava, free from all vices. As long as there is a malice in our heart, we won't be able to think of Krishna at the time of departing from this material world. And only pure Vaishnavas can think of Krishna at the time of departing, like Srila Prabhupada taught. At the time of departing, Srila Prabhupada uttered Hare Krishna. Then that was the last breath. One devotee, I think he is here in Mauritius, His Holiness Bibi Govinda Maharaj, he was there. He said, I watched this. So we all should try to become a true Vaishnava so that departing from this material world will be good. And we stay on the mental plane, so many vices, so many bad thoughts, difference, partiality. I have seen Prabhupada, no partiality. He will say what is right, he will side with the right and oppose the wrong, doesn't matter who he may be. This I have seen in my life. I will tell the greatness of Srila Prabhupada. When Sri Niketan came to this country, we both came together from India. This flight used to come to Nairobi. From Nairobi, I stayed there and he came here. And I visited him also here when he was staying in the house of Shivpal. Shivpal is the one who took me to see the Shiv Sagar Ram Gulam. He was a friend of Ram Gulam. So, Srila Prabhupada was so great, totally on the transcendental plane. This one happening took place in
Nairobi, in Kenya, in Mombasa. Happening was like this, that one senior devotee, he was sannyasi, and one live member complained me about him. By Prabhupada's mercy, I was making live member. He said, your sannyasi can stay in the hotel? I said, no. He has an electrical business. He said, my man went to this one hotel and this sannyasi was staying there. Staying hotel, what eating there? They cook meat and veg, non-veg together, drink, and all kind of dirty things happen in the hotel. And African hotels means people comes there for sense gratification, nothing else. So this, my godbrother came, and I questioned him. I said, where you were for 7 days? He said, why? I said, one live member complained that you were staying in the hotel. So what was his answer? Live member means books, magazine, card, and nothing else. When live member cannot say anything, I said, I don't agree with you, I said to him. Then he became very violent and physically he assaulted me. And above that, he wrote a letter to Prabhupada. Prabhupada, my activities are questionable. I am opening a separate temple. I didn't write. But somebody wrote to Srila Prabhupada on my behalf. The Prabhupada, he did like this with Nava Yogendra. See Prabhupada's superness and greatness. Prabhupada wrote him back. Why you misbehaved with him? You apologize him. He said, yeah, you are a big devotee and you can do any damn thing. You apologize. He never apologized. And Prabhupada wrote back that original letter of his, he has thrown in the dustbin, and by intuition, I collected that from the dustbin. I have that letter with me. Prabhupada wrote him, if he is opening a separate temple, let him do that. After all, it is preaching. You preach to the Africans, let him preach to the Indians. And Prabhupada, he didn't side with him. And all that devotees side with him, wrote to Prabhupada against me. But Prabhupada was, Trikala again, present, past and future. Such a great soul is very rare. So what I'm trying to say, we should all head towards purity. We should not, just pass the bucks around and this and that. Then we will be pushing our future in dark. Because sooner or later we all have to depart from here. Me, you, he, she, nobody can stay here. If we won't live in a good conscience, live in dirty conscience, malice conscience, that our departing won't be good. So Prabhupada wish us all, because he is writing to that devotee, correcting him. And Prabhupada didn't side with him because he is a big person. I am small guy. But big person was wrong, so Prabhupada corrected him. He didn't take the correction, unfortunately then. So we have to follow the footsteps of Srila Prabhupada. Because we are all going to sit in one test. That test, examination, is departing from this miserable material world. Our departing should be Krishna conscious. I should depart while I am remembering Krishna. But during my lifetime, if I am partial to someone, I am not impartial, I am not trying to be Krishna conscious, I am not trying to serve Krishna wholeheartedly, selflessly, I am not what Prabhupada gave us. Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam bha jagadish kame. This is what Lord Chaitanya said. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women,
nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, kavitam. Then what do you want? I only want your causeless devotional service. Prabhupada was performing this causeless devotional service, and on the basis of that purity, he gave Krishna consciousness to the whole world. And now our duty is to follow the footsteps of Srila Prabhupada, not follow our own whims. See, Prabhupada's God brothers, they were following their own whims. Bhaktisiddhanta Prabhupada tried to send his disciples, Prabhupada's God brothers, to the West. They went to different places, but they were all failure. Came to London, came to Paris, some other places. They all raised hand before, they say, nothing, we cannot preach there. If we want to preach to the Westerns, then we have to start eating meat. And then Prabhupada ordered our Gurudev. Bhaktisiddhanta Prabhupada ordered to our Gurudev Prabhupada. And he went wholeheartedly, with very, very humble nature, with full of purity. And by his mercy, now the whole world has the opportunity to chant Hare Krishna. And my point is only this: we should all try to become serious in devotional service. Because at the time of departing from here, nobody is going to help us except Krishna, by the mercy of Srila Prabhupada. So, and one thing, Prabhupada was not interested in big following. Show me that letter. Prabhupada is writing one letter to one of our God brothers, and see what he wants. And we should strictly follow Prabhupada. And this letter is very, very important. This letter was written to Hansadut. Hansadut was a sannyasi. This letter was written 22nd June 1972. Now, we have got so many students. 1972 Prabhupada is saying. And so many temples. But I am fearful. Gurudev is saying, Prabhupada, I am fearful that if we expand too much in this way, that we shall become weakened, and gradually the whole thing will become lost. What Prabhupada is saying, see, each and every word is so important. What he wants, further he's saying, just like milk, we may thin it. More and more with water for cheating the customer. But in the end, it will cease to be any longer milk. Better to boil the milk very vigorously and make it thick and sweet. That is the best process. So let us concentrate on training our devotees very thoroughly in the knowledge of Krishna consciousness. From books, from tapes, by discussing always and in so many ways, instruct them in the right propositions. So Srila Prabhupada, the big crowd, but
If they are not Krishna conscious, there's a crowd. What is the crowd? Prabhupada said this, another place. I don't want millions of stars. I want one moon. One moon is visible among millions of stars. Very nice. Means he wanted devotees. Devotees will be able to preserve Krishna consciousness and help others to make devotees. Expended so many, then unfortunate thing. So, by the mercy of Srila Prabhupada, we are trying to follow him. We also have many faults, but trying. Try is the key of success. Just like when Lord Ram was building a bridge over the sea to go to Lanka, so Hanuman and so many of this monkey warriors, they're throwing the big stones in the sea and they were floating. Then little squirrel came, that time, Ram's time, squirrel. So everybody is helping Ram. Let me also help. She tried, pick up some little pebbles, started throwing in the sea to help to build that bridge. And Hanumanji said, yes, get aside. You may come underneath my feet and die. She felt insulted and went and complained to the Ram. He said, my lord, I am also trying to help you. So Hanumanji said like this. So then Lord said, Hanuman, she is also trying. Even similar, same way we are trying to, we are very insignificant, but we are trying that this mission should glorify this according to the Prabhupada, not according to our own whims. Because we are not pure. We have to follow pure devotee. If we follow pure, then gradually we will also head towards purity. And if we follow our impure mind, then we will ruin ourselves and we will ruin everything. And then life will be spoiled. Life can only become, gracious and wonderful if we follow Srila Prabhupada. Prabhupada in his letters, in his tapes, in his books, explaining everything. It's up to us now to follow. And Prabhupada mentioned this. It is next to impossible that the whole world can become devotee. But even if some people will become devotee, the world can be saved. Prabhupada wanted devotee, pure devotees. What is pure devotees? Anna vilashata shunnam. Another Mahabhagavat, Srila Rupa Goswami is saying. Anna vilashata shunnam jnana karmadi anavritam. Anukullena krishnanu shallam bhaktir uttama. Material desire must be zero. No more material desire. If there is any material desire, that will keep me in this material world. That's why Lord Chaitanya said, na dhanam, na janam, na sundarim. Either we are after money, or followers, or beautiful women, or want to become a big orator, speaker. No, nothing. But you want then, Lord Chaitanya is saying, mam janmani ishware bhavatad bhaktir ahaitukitoi. My Lord, life after life, I only want your causeless devotional service. Ahaituke means causeless, no cause. Only that devotion will take us back home, back to God. And it's not that in one life can also go, but he has to free himself from all the vices. Lord Chaitanya's guiding, O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, no followers.
Nor do I want to become a big orator. Then what you want? I only want your causeless devotional service. No cause. Birth after birth. Not in one birth we can go if we become serious. If I become serious, then I can return back home. But unless I become serious, totally fixed in Krishna consciousness, I cannot return back home. I cannot go back home. And I have seen devotees, Prabhupada wish all of us to go back home. And he was not from this material world. Such a great soul is very rare. People say Prabhupada was a pure devotee, and I say he was not a pure devotee. Then who he was? He was more than pure. Very special personality, very. Some pure devotees are there around, but Prabhupada was more than pure. He was a transcendental personality. See his work, what he did. Today, we have the opportunity to become Krishna conscious. Otherwise, the whole world was deprived of this. World was deprived of Krishna consciousness. So many bogus, bogi yogis were going to the West and cheating the people and making the mess everything. People were losing faith in so-called these saintly persons. Prabhupada, the real saint, real Vaishnava. So we all have Prabhupada, and we should, my humble request to all of you is, all the Matajis and all the Prabhus, follow Srila Prabhupada strictly. Don't follow your whims. You are not a pure devotee, but you can head towards purity by the mercy of Prabhupada, by following Prabhupada, not by following your own unclean mind. Hare Krishna. So, 10 offenses to avoid, very important. And proper situation is very important. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Again, Vancha kalpatarvesya kripa sindhu vaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Vaishnav Thakur Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavinda ki, Namachari Srila Das Thakur ki. Any question anybody has what I said, feel free to ask the question. You have any question in the internet? Any question anybody has here? हैं? अगर हमने सीखा कुछ इसको के बारे में, ये प्रिंसिपल ऐसे है, तो अगर दूसरे भक्त को बता रही हैं, वो नहीं मानना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? नहीं मानना चाहते हैं, ये सब रूल एंड रेगुलेशन हैं? मंदिर में आना चाहते हैं, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन जो है, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने कहा गया, वो फॉलो नहीं करना चाहते। कभी ऐसे भी होते कि मेरे गुरु ने ये नहीं कहा। देखो ऐसा है, अगर वो नहीं फॉलो करना चाहते तो हमें तो फॉलो करना है ना। शुरुआत में लोग नहीं करेंगे, ग्रेजुअली दे विल बी एलिवेटेड, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। कोई फॉलो नहीं कर रहा ना, तो एकदम फोर्स मत करो उसको धीरे धीरे फॉलो करेगा। अभी जैसे देवी देवताओं को पूजना, कोई लोग पूछते हैं उनको समझाना है धीरे धीरे। ये नहीं उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे तो और तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। प्रभुपाद देव वाज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। उन्होंने देखो ईसाइयों को भी भक्त बनाया, उन्होंने मुस्लिम लोगों को भी भक्त बनाया, सबको भक्त बनाया अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो अगर वो नहीं फॉलो करना चाहते उनको समझाओ तरीके से। को किन लोगों की तुम बात कर रहे हो? बाहर से आने वाले लोग। ऐसे भी होते हैं बाहर से।
इसको तो जानते हैं ऐसे थोड़ा सा नियम से नहीं फॉलो करते हैं जब हम उसके नहीं है, हाँ नहीं, वो मदद करते हैं, तुम मदद करता है, क्या बोला मैं समझना। उसकी मदद कर रहा हूँ जो मैंने सीखा हो। हैं? हाँ जी, वैष्णव की जो मैंने सीखा है उसकी मदद कर रहा हूँ, वो फॉलो नहीं करना चाहते। तो हाँ उसको बोलो भाई ये शास्त्र में है, ये जो बात मैंने बताई ऐसा है, समझाने का प्रयास करो। हाँ। और कोई प्रश्न किसी को? तेरे को प्रश्न है? हाँ हाँ मेरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने जैसे सुन लिया, इसलिए आपको इस बारे से अगर कहेंगे तो अच्छा है। तो ऐसे है कि सब हमारे जो घर ब्रदर का सिस्टर हैं, तो वो ऐसे दिल में अंदर कुछ है सेकंड इनिशिएशन के बारे, लेकिन आपसे नहीं कह सकते। अभी इनिशिएशन की बात नहीं हो रही, जो मैंने कहा ना, पॉइंट पे बात करो। जैसे वो लोग सोचते हैं कि वो ब्राह्मण की जैसे क्वालिटीज है, वो ऐसे सोचते हैं। इस बारे से मैं आपको जैसे और शिक्षा दो कि हम, जैसे हमने कहा कि हम क्या शिक्षा देगी तुम हमको? कि हम ट्राइंग कि वैष्णव बन रहे हैं, लेकिन अभी ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि दूसरे ने मिल गया, ये हाँ हम कब मिलेंगे, हम इसके बारे में देखो, प्रभुपाद जी को हमने फॉलो करना है। ब्राह्मण इनिशिएशन के बारे में मैंने सुना कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते, तो उन्हें क्वेश्चन आया ये कि हम ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं देते। उधर बैठो, साइड में पीछे बैठ जाओ, उधर बैठो, आ जा रहा है ना उसमें से। अभी देखो ये है, ये ब्राह्मण जन्मा नहीं है, उसका ब्राह्मण इनिशिएशन है, वो भी नहीं ब्राह्मण जन्मा, उसका भी ब्राह्मण इनिशिएशन है। इसके बारे में प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा कि इन द बिगिनिंग वी गिव द इनिशिएशंस बिकॉज वी वांटेड टू रन द सोसाइटी, बट नाउ द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट। ऐसे ब्राह्मण बना दिया किसी को, उसको पता कुछ है ही नहीं। ब्राह्मण क्या है? कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से वो ब्राह्मण से अच्छा बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। समझाई? तो अच्छा बन नहीं सकता। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं ऐसे 2 पैसे का ब्राह्मण शर्ट पहन लिया तो ब्राह्मण बन गया वो। ही हैज टू बिकम। प्रभुपाद ये चाहते थे स्टैंडर्ड सेट करो। प्रभुपाद ने कहा है कि डिसाइपल में जो 12 क्वालिटीज है ब्राह्मण की, वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं, तब स्पिरिचुअल मास्टर देख करके उसको ब्राह्मण। तो हमें जब ब्राह्मण के गुण आएंगे तो ब्राह्मण इनिशिएशन है प्रभुपाद जी की कृपा से। मतलब ऐसे बना दिया, उसको पता कुछ है ही नहीं, वो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा सोसाइटी में। समझाए ना तुमको? तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो अपराध करते हैं। हम प्रभुपाद जी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शब्द सभी को समझ आया, इसने माधवी माता ने ये पॉइंट लाया। प्रभुपाद ने ये कहा कि शुरुआत में हमने दीक्षा दी क्योंकि सोसाइटी चलानी थी, अभी स्टैंडर्ड सेट करना क्या है। स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? और किसी को यानी भक्त को किसी को कोई शंका इसके बारे में? शबरी माता तुमको कोई बोलना है? और कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास नहीं है कोई प्रश्न? देखो, अगर हम लोग
if we want to perfect our life, then we have to follow Prabhupada seriously and strictly. Not we have to follow our own whims. Whatever comes in my mind, I will do that. No. That will create a disturbance in the society, and we will be penalized for that. बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। अल्बा प्रभुपाद का टीचिंग्स दे दो यार, टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। अल्बा दे ये दो उसको। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। आज 23 तारीख है, तो ये जो आज के जो शिक्षा है ये प्रभुपाद जी ने रोम में ही दी थी। रोम जो इटली में है। आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। कुत्ते बिल्लियां आपस में लड़ते हैं, प्रभुपाद कहते उसको नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को आयरलैंड वासी मानता हूं अथवा मैं अंग्रेज हूं, तो वह एक ही बात है। जैसे कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं और मैं सोचता हूं मैं अंग्रेज हूं, तो मैं कुत्ते से भी बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूं। जैसे हम कुत्तों के बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद ने कही है। पशु कुत्ते बिल्लियां आपस में क्यों लड़ते हैं? एक कुत्ता सोचता हूं मैं कुत्ता हूं, दूसरा लड़ते हैं आपस में, झगड़ते हैं। अगर आदमी भी ये सोचेगा मैं अंग्रेज हूं या मैं इटालियन हूं या मैं इंडियन हूं या कुछ, तो वो फिर वो भी जानवर जैसे ही प्रभुपाद कहते हैं, वे लड़ेंगे आपस में। आध्यात्मिक जीवन यहां से शुरू होता है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। जीवात्मा सभी में एक बराबर है। ये नहीं कि एक कोई नाम से ब्राह्मण है उसमें अच्छी जीवात्मा है, एक कोई शूद्र है उसका खराब जीवात्मा है। वो कर्मों से शूद्र बना, कर्मों से ब्राह्मण बना। अगर ब्राह्मण अभी शूद्र की तरह बिहेव कर रहा है तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर शूद्र ब्राह्मणी की तरह बिहेव करता है तो वो ब्राह्मण है। ये टीचिंग्स प्रभुपाद ने दी हैं। ये बेस्ड ऑन भगवत गीता। कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरी सृष्टि में मैंने 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 वर्ण 4 आश्रम। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग से, जन्म कर्म विभाग से नहीं कहा भगवान ने। अगर कोई एक ब्राह्मण घर में जन्मा है
कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, जन्म से कोई नहीं है। कर्म से, प्रभुपाद कृपा से जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद ने दी है, कर्म से हम ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं। तो प्रभुपाद टीचिंग्स जो हैं वो ही हमको नरकों में जाने से बचा सकती हैं, प्रोवाइडेड हम उनको फॉलो करें, प्रभुपाद के अनुसार हम चलें सीरियसली, बातों से नहीं। जो मेरे मन में आया वो मैंने किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, कल को मुझे उसका दंड भोगना पड़ेगा। और हमने पहले भी कहा था, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा है जब अंत अच्छा है। अभी देखो कि ब्राह्मण की बात इसने की थी, हरिदास ठाकुर born in a Muslim family. He was not Brahman, but he was 1,000 times better than the Brahman. He was परम वैष्णव। अगर किसी को जप करने में मुश्किल आती है, उसको हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। और हरिदास ठाकुर इतने महान थे, कहते मैं तो यवन हूँ, मंदिर में नहीं जाते थे बेचारे। हरिदास ठाकुर दूर रहते थे मंदिर से, और सुबह मंदिर का जो टॉप है उसमें लगा है चक्र, उसके दर्शन करते थे, प्रणाम कर। 2 जगन्नाथ हैं, एक अचल जगन्नाथ जो मूर्ति रूप में मंदिर में है, और एक चल जगन्नाथ जो चलते फिरते हैं। चल जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, अचल जगन्नाथ मूर्ति में जो मंदिर में विराजमान है, एक ही है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ भगवान रोज प्रसाद लेके हरिदास जी के पास जाते थे। ये है प्योरिटी। अपने को कितना विनम्र मान रहे हैं हम। नाम से अपने आप को ब्राह्मण बना लेंगे और कर्म करेंगे हम शूद्रों वाले, तो क्या लाभ होगा? उसका कोई लाभ नहीं होगा, हमें भी फायदा नहीं होगा, और जिसको हम मिसगाइड करेंगे उससे भी वो भी बेचारा भटक जाएगा। तो ये उदाहरण हमारे वैष्णवों के जीवन में है, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिए, सिखाए। आज हम लोग बॉडी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं कुत्ते बिल्लियाँ, कुत्ते बिल्लियों की तरह हम बन गए हैं। कुत्ते आपस में लड़ते हैं, को स्टॉप नहीं कर सकते उनको। अभी देखो ऐसा है कि यहाँ का भी ऐसे ही है, कुत्तों के कुछ एरिया बना देते हैं कुत्ते अपना। अगर दूसरे एरिया का कुत्ता उस एरिया में आता है तो इस एरिया के कुत्ते उस पर अटैक कर देंगे, तो हमारे एरिया में क्यों आया? ये कुत्ते हैं, देखा गया था। इसी प्रकार हमने कंट्रोल कर दिया। प्रभुपाद कहते थे दिस इज डॉग कॉन्शियसनेस। इफ यू गो टू इंग्लैंड, से व्हाई यू हैव कम टू इंग्लैंड, दिस इज अवर लैंड, एनिमल कॉन्शियस। तो हमें कृष्ण कॉन्शियस बनना है। सब भूमि गोपाल की, सारी दुनिया सब भगवान कृष्ण का है। तो हमें अपने आप को एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है, आत्मा के स्तर पर आना है। भाई प्रभुपाद मर्सी, प्रभुपाद जी की मर्सी लेकर, प्रभुपाद की मर्सी के बिना तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग दी है, वो आज भी हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम उनके श्री चरणों में प्रे करेंगे तो प्रभुपाद मदद करेंगे। प्रभुपाद कृपा करो, मुझे भक्ति दे दो। भक्ति हरिदास ठाकुर, ए महाभागवत वैष्णव, happened to born in a Muslim family, still he is thinking I am very fallen, but he was not fallen at all. He was totally transcendental. कौन आउट ऑफ 24 आवर्स 22 आवर्स कैन चांट कर सकता है? 22 घंटे हरिदास जी जप करते थे, 2 घंटे में खाना पीना सोना सब काम करते थे। Who can be like him? Nobody. तो कोई भी अपने आप को एलिवेट कर सकता है। अभी शबरी कौन थी? शबरी जो थी
वो शूद्रों की, जंगली लोगों की कन्या थी, मीट ईटर, वो सब उल्टे सीधे काम करने वाले। लेकिन शबरी माता इतनी प्योर बन गई कि राम जी जब उस वन में आए, बहुत सारे ऋषि मुनि जो सब ब्राह्मण थे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर। भगवान शबरी के पास गए और शबरी का एक्शन देखो क्या था। भगवान कहते हैं हमें कुछ खाने के लिए दो। भगवान मांग रहे हैं त्रिलोकीनाथ। भोली वाली शबरी, बेर थे जंगल में, बेर इधर होते हैं नहीं, बेर को क्या कहते हैं इधर, मास्को, मास्या, मास्को, वो बेर होते हैं इधर, इंडिया में बहुत होते हैं। तो वो इतनी इनोसेंट है पर प्योर डिवोटी। उस बेर को थोड़ा सा टेस्ट करती थी, अगर मीठा है तो राम जी को देती थी, खट्टा है तो फेंक देती थी, राम जी खा रहे हैं बेर। तो ये हमारा कल्चर है जो लुप्त हो रहा था, गायब हो रहा। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। बहुत सारे ब्राह्मणों ने, बहुत सारे सन्यासियों ने, अभी देखो एक शंकराचार्य, एक जगह एक प्रोग्राम था पठानकोट, तो वहाँ जिस साधु ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, आई हैपन टू मीट हिम इन लंदन, उसने मेरे को थोड़ा सुना तो उसने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया पठानकोट में। आज में चले गए तो उधर शंकराचार्य भी आया था एक। तो मैंने कहा शंकराचार्य आया है, तो मैं कुछ प्रभुपाद जी की बुक्स लेकर उसको मिलने गया। उसने जब मेरे को दंड के साथ देखा, he started shouting at me, कहते तुम्हारे गुरु ने हिंदू धर्म खराब कर दिया है, वो शूद्रों को ब्राह्मण बना रहा है। मैंने कहा तेरे जैसे लोगों ने खराब किया है। बहुत सारे लोग जो उसके साथ मिल गए, मेरे पर चिल्लाने लगे, मैं तुम सारा समाज खराब कर रहे हो। और मैं फिर प्रोग्राम नहीं किया, मैं चला गया वहां से छोड़कर उसको। उस शंकराचार्य है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं अपने ठेकेदार धर्म के। रियल प्रीचर, रियल follower of Krishna is Srila Prabhupada with the high understanding based on Bhagavad Gita and Bhagavatam. तो मैंने उसको इतना रिफ्यूट किया, इतना वो मेरे पर मुझे बोलने लगा। प्रभुपाद जी के बारे में उसने कुछ बोला कि तुम्हारा गुरु दूसरे लोगों को हिंदू बना रहा है, वो नहीं बन सकते। मैंने कहा तेरे जैसे लोग सब खराबी कर रहे हैं धर्म की। मैंने उसको बोला, पर उसके जो साथ थे, उसके फॉलोअर जहाँ वो ठहरा था, वो चिल्लाने लगे मेरे पर, एक और चिल्लाने लगे। मैं आई डिडंट केयर, मैं जगह छोड़ के चला गया। तो ऐसे लोग बहुत इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन हम सबको अच्छा प्रभुपाद जी का सेवक बनना है और शुद्धि का प्रचार करना है, अपनी शुद्धि भी करनी है और दूसरों को भी ये रास्ता बताना है, तभी भाई हम बच पाएंगे। नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, हालत कुत्ते बिल्लियां बन जाएंगे सब और लड़ेंगे, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद दिस बॉडी व्हिच दे आर नॉट। हम तो जीवात्मा हैं। तो प्रभुपाद की टीचिंग जो है, ये रोम में दी थी प्रभुपाद जी ने 23 May 1974। Prabhupada's teachings are transcendental, or Prabhupada's teachings have no match, it's matchless teachings, based on the scriptures. और इन टीचिंग्स को फॉलो करने से ही हमारा जन्म भी सफल हो सकता है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये जन्म बड़ा अनमोल हमको मिला है। इसकी इम्पोर्टेंस प्रभुपाद जी ने समझी और समझाई। हमें उनकी कृपा से इसको समझना है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है और अच्छा बनना है।
तभी परिणाम अच्छा होगा। और अच्छे नहीं बने तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। जैसे एक भजन है, वो निकालो कहीं, तेरे पास है वो मैगजीन। अंतर मंदिरे जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मन जागो जा, माधव कृष्ण। One Vaishnava is praying, नभ अरुण समा जागो हृदय ममा, नभ अरुण सम सुंदर गिरिधारी लाल, सुंदर गिरिधारी माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण। नैना घने बेतरी बादल, नैना घने बे जागो जागो तुमी किशोर श्याम, जागो जागो किशोर। नैना घने बे तरी बादल, नयन जागो जागो तुमी किशोर श्यामल। मिला श्री राधा प्रीतम जागो हृदय मम, जागोगे गोस्ते रखा, जागोगे माधव कृष्ण गोपाल, माधव कृष्ण। अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। अंतर मन जागो जा, यशोदा दुलाल ऐसो ऐसो नो नीचो, यशोदा प्राणेरा देवता ऐसो ही किशोर, प्राण लोई राधा में हृदय ब्रिज धामे, ऐसो के ब्रिज रखा, ब्रिज रखा माधव कृष्ण गोपाल, माधव। इसका ट्रांसलेशन निकाला है? वेरी गुड, थैंक यू। ये है ना, ये भजन जो है ये सबको गाना चाहिए। इस भजन का अर्थ क्या है? बड़ी दा मेरी ऐनक दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा राम राम हरे, हरे कृष्णा हरे राम। अभी देखो इस भजन में भगवान से प्रार्थना की गई है, अंतर मंदिरे जागो जागो, प्लीज अराइज इन द टेम्पल ऑफ माई हार्ट। ओ माधव, ओ कृष्ण, ओ गोपाल,
माधव कृष्ण का है, कृष्णी माधव वही गोपाल, मेरे हृदय में अब जागिए प्रभु। अभी हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, सबके अंदर हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्लीज अराइज ग्लोइंग रेडियंटली इन माई हार्ट लाइक द न्यू सनराइज। ओ ब्यूटिफुल वन, ओ डार्लिंग गिरधारी लाल। भगवान ऐसे जागे जैसे सूर्यदेव निकलते हैं, सारी अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसे ही बड़े सुंदर भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। टीयर्स आर पोरिंग फ्रॉम माई आईज लाइक ए मॉनसून क्लाउड बस्ट। प्लीज अराइज ओ यूथफुल कृष्णा, ओ डार्क श्यामल, ओ मोस्ट बिलव्ड ऑफ श्रीमती राधा रानी। प्लीज अराइज इन माई हार्ट। प्लीज अराइज ओ मेंटेनर ऑफ द काउहर्ड्स। भगवान गायों की रक्षा करते हैं, घोषते रखाल। भगवान ने गायों का खुद पालन किया। भारत में भी, इस देश में गाय माता मारी जाती है, बड़ा पाप है, बहुत पाप है। गौ माता जो है वो हमारी माँ है। तो भगवान ने गाय का पालन करके सिखाया हमको, यही यहाँ कहा है। फिर ओ डार्लिंग ऑफ यशोदा, कम प्लीज कम। ओ बटर थीफ, मक्खन चुराते थे भगवान, ये भगवान की लीला है। तो लोकीनाथ भगवान अपनी लीलाओं से लोगों को सुख देते हैं। ओ बटर थीफ, ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, प्लीज कम। ओ यूथफुल बॉय, bringing Radha along at your left in the abode of Brija within my heart. Please come. O protector of Brija, please come. तो देखो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको जगाना है। कैसे जागेंगे वो? अगर हम लोग बुराइयों को छोड़ेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, कृष्ण कॉन्शियस को इंक्रीज करेंगे, तो भगवान हृदय से जगेंगे। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े दिनों के बाद आई याद में आया। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, नव अरुण समा जागो हृदय ममा सुंदर गिरिधारी लाल। नयन घने बेतरी बादल, प्रभु मैं आपके विरह में, आपकी अवसंस में मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, भारत की बादलों की तरह, बारिश की तरह। नयना घने बेतरी बादल, जागो जागो तुम्ही किशोर श्यामल। श्री राधा प्रीतम जागो हृदय मम, जागो हे घोषते रखाल। ए गायों के रक्षक प्रभु मेरे हृदय में जागो। ये हमारा, अगर भगवान हृदय में जगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं जगे, हम मेंटल प्लेन पर रहे तो गड़बड़ ही गड़बड़ होगी भाई। हम भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। ये अभी कलयुग में हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने बनना है। कोई बने, कहीं से बने, मॉरिशस से बने, भारत से बने, अफ्रीका से बने, कोई अच्छा बने। अच्छा बनेगा, अच्छा वही है जो शुद्ध भक्त है, जो प्रभुपाद की कृपा से शुद्ध हो गया है, जिसका कृष्ण के चरणों में पूरा विश्वास है। जो सोदा दुलाल ऐसो ऐसो नौनी चोर, प्राणेरा देवता ऐसो ही किशोर। लोई राधा बामे हृदय ब्रज धामे। मेरे हृदय रूपी ब्रज में आप राधा जी के साथ में प्रकट हो जाइए प्रभु। हृदय ब्रज धामे जागो हे ब्रिजे रखाल। हे ब्रिजवासियों के रक्षक, हे प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिजवासी, मेरे हृदय में जागो। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप कृपा करके सब इसकी पूर्ति करो। अपने हृदय में भगवान को जागृत करने का प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Any question? Anybody has? No question? तेरे पास तो नहीं कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण.